Good morning, everyone. Students, we have started chapter 3 An Empire Across Three Continents, in which we have already covered the base of the chapter. And today we will cover the another topic, social hierarchies. It means the social classes of the Roman Empire, because the Roman society somewhere it was full of diversities, so there were different social classes existed, especially in the early and the late ages. It means in the early empire and in the late Roman empire. So student, अगर मैं early age की बात करूँ, in the early 3rd century the senates, they roughly numbered 1000, and approximately half of the senator, it means 500 senators, they came from the Italian families. And student, who were senators, I told you that the senators was one of the main player of the Roman empire, and they were the main administrator who were handling all the administration system of the Roman empire, and they always considered themselves as higher than the even the king. So the first one were the senators in the early age, it means in the first, second and third century. And then the second one is the leading members of the equestrian class. इक्विस्टीरियन क्लास होते हैं घुड़सवारी के लोग. इट मीन्स दे वर रैंक्ड जस्ट बिलो द सीनेटर्स in the social ladder, and I can say they were the second tier of the elite class, known for its wealth, known for its military services, because they served the cavalry of the Roman Republic. Senators, they were the elites also. वो भी बहुत रिच थे, लेकिन उससे जो थोड़े कम रिच थे वो थे इक्विस्टेरियन क्लास के जो लोग थे, जो स्पेशली कैवलरी प्रोवाइड करवाते थे रोमन एम्पायर में. दैट इज़ वाई दे कंसिडर्ड द एरिस्टोक्रेट्स ऑफ द रोमन रिपब्लिक. देन द थर्ड वन इज़ द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल. जो सोसाइटी के रिस्पेक्टेबल पोस्ट थी, उनके जो लोग थे उनको थर्ड नंबर पर रखा गया. देन द फोर्थ वन इज़ द अनकेम्प्ड लोअर क्लास, who were addicted to the circus and theater displays. जो मिडिल क्लास फैमिली थी या जो लोअर क्लास फैमिली थी उसको फोर्थ रैंक पे रखा गया. एंड द लास्ट वन इज़ द स्लेव्स. स्लेव्स मीन्स द बॉन्डेड लेबर. जो बॉन्डेड लेबर थी बिल्कुल लास्ट कैटेगरी में आते थे अर्ली एज में. अगर बच्चे हम लेट एज की बात करें तो लेट एज में थे एरिस्टोक्रेट्स थे, मिडिल क्लास थे एंड लोअर क्लास थे. एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, एंड स्पेशली इन द लेट एज, इट मीन्स इन द लेट रोमन एम्पायर, द सीनेटर्स एंड द नाइट्स, दे हैड मर्ज्ड into a unified and expanded aristocracy. It means at least half of all the families were of African or the Eastern origin. एंड स्टूडेंट एरिस्टोक्रेसी है तो वेल्दी लोग तो होंगे ही होंगे. सो समवेयर यहाँ पे जो लेट एम्पायर में सबसे पहले थे एरिस्टोक्रेट्स. सीनेटर्स तो थे ही थे, साथ में नाइट्स भी थे. नाइट्स मीन्स एक फोर्थ क्लास आई, मर्ज हुई, और वो जो थे दोनों मर्ज होकर डोमिनेट करने लगे सोसाइटी को. इसके बाद बचे मिडिल क्लास. मिडिल क्लास नाउ I can say the mass of person that connected with the imperial services in the bureaucracy and the army. जो आर्मी के लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो मिडिल क्लास थे. बच्चे, मैंने आपको बताया था द डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोक्रेट्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स. सो जो मिडिल क्लास के लोग थे वो मेनली आर्मी के और ब्यूरोक्रेसी के लोग थे. इट ऑल्सो इंक्लूडेड मर्चेंट्स, फार्मर्स, मिडिल क्लास फैमिलीज who were dependent on the government services and the state for the livelihood. ये सब किस में आ जाते थे? मिडिल क्लास में. एंड द लास्ट वन इज़ द लोअर क्लास. लोअर क्लास मीन्स below them were the vast masses of lower class known as humilists. So student, these classes mainly consist a rural labor force, workers in the industrial and military establishments, migrant workers, self-employed artisans, a large number of casual laborers in the big cities, and thousands of slaves that were found all over the
Western Empire in particular. So student, that time in the early age, it means up to 3rd century and the onward, there were the common thing is that जो फर्स्ट रैंक था वो मेनली सीनेटर्स का था, अर्ली एज में भी और लेट एज में भी. बट जो सेकेंड क्लास यहाँ पे था इक्वेस्टेरियन क्लास का, इट मीन्स हु आर प्रोवाइडिंग द कैवेलरी एंड हु आर रैंक जस्ट बिलो द सीनेटर इन द सोशल लैडर. बट यहाँ पे जो लेट एज में था वो मिडिल क्लास फैमिलीज ने लिया एंड देन लोअर क्लासेस ने लिया. और लोअर क्लास में क्या क्या आ रहे थे, रूरल लेबर फोर्स आ रहे थे, वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स आ रहे थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, माइग्रेंट वर्कर. लेकिन बच्चे यहाँ 3rd नंबर पे थे the respectable, it means in the early age, the respectable section of the people. So this was the social hierarchies that was common in the early and the late Roman Empire. Student, I hope this topic is clear to you. Thank